Welcome you all. Today we are going to talk about the topic literary stylistics. This topic is from the contents and introduction to linguistics semester 2. So without a further ado, let's get started our today's topic. Here is the definition from the book An Introduction to Linguistics by Pushpinder Siyal and D.V. Jindal. According to him, the study of variation of language, the use of language in communication has also led to new ways of studying literary texts and nature of literary communication. इसका मतलब यही है कि लैंग्वेज की वेरिएशन कम्युनिकेशन के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेज की वेरिएशन का इस्तेमाल और इसकी स्टडी को हम लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर. For example, the style of religious sermon, the style of sports commentary. Now, these are actually the examples that in religious sermons we use different language, while when we talk about sports commentary, we do have a different genre of language. So, this are these differences of language, or variation of language, the use of language in communication. We may call it literary stylistics in linguistics. Similarly, we may use this notion to describe the style of literary work. That is, we may describe its features at the levels of phonology, syntax, lexis. यानी लिटरेरी वर्क के अंदर हम लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स के मुख्तलिफ लेवल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फोनोलॉजी के डिफरेंसेस होते हैं, सिंटैक्स के लैंग्वेज के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, लैक्सिस के डिफरेंसेस होते हैं. यानी हम प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो सकता है लैंग्वेज के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का हो सकता है, या वोकैबुलरी का हो सकता है. To distinguish it from other texts and to appreciate how it achieves some unique effects through the use of language. This kind of study is called literary stylistics. Now, this all study the use of these different features in different levels of communication or different variation of language is actually the study of literary stylistics in linguistics. Here is actually the same definition from the same book, that literary stylistics is actually the variation of language, the use of language in communication, and it is actually a person's distinctive language habits are the set of individual characteristics of language use. It means to say different people, they have different language habits, they have individual characteristics in speaking language or the language use. Number B, set of group of people at one time. At one time, different set of people, they use different variation or variety of language. For example, Samad's style, etc. जिस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई समद का जो है वो एक डिफरेंट स्टाइल है, और एलिज़ाबेथन राइटिंग स्टाइल वी मे कॉल इट इन लिटरेचर. There are so many other writing styles in literature. Literary stylistics is a practice of analyzing the language of literature using linguistic concepts and categories, with the goal of explaining how literary meanings are created by specific language choices and patterning the linguistic foregrounding in the text. Now, when we talk about literary stylistics, it is actually the practice how language is actually used in different genres of literature. This is actually the linguistic concepts and categories when we talk about the study of literary stylistics. Stylistics is actually a branch of linguistics concerned with the study of characteristic choices in use of language. This definition is actually taken from Collins English Dictionary, complete and unabridged, Harper Collins Publishers. अगर हम स्टाइलिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये ब्रांच है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है, और इसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं लैंग्वेज के बहुत सारे जो चॉइसेस हम यूज़ करते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर या
मुख्तलिफ जो है वो लिटरेरी डिस्क्रिप्शंस के अंदर, तो उसको हम लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं इस डिक्शनरी के मुताबिक. Especially literary language as regards sound, form, or vocabulary made by different individuals or social groups in different situations of use. यानी वो डिफरेंसेस जो है वो साउंड के हो सकते हैं, फॉर्म के हो सकते हैं, वोकेबलरी के हो सकते हैं. मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप या पीपल जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं. और इसी ही मुख्तलिफ जो है वो यूज़ ऑफ लैंग्वेज को लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स कहा जाता है. Here, literary or stylistics is the study of varieties of language, whose properties position that language in context. For example, the language of advertising, politics, religion, individual authors, etc. यानी कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो हम वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज की स्टडी को कहते हैं. आप देखें, अगर एडवर्टीज़मेंट की बात करते हैं तो उसमें एक मुख्तलिफ लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. इसी तरह से रिलीजन या मुख्तलिफ ऑथर्स जो है उनका अपना अपना एक राइटिंग स्टाइल होता है. Are the language of a period in time, all are used distinctively and belong in a particular situation. In other words, they all have a place or are said to use a particular style. This definition is taken from thefreedictionary.com. There are so many functions of language, or we may say functional styles in language. Number one is fiction, poetry, emotive, prose, drama. This is actually the functional style we use in fiction. Scientific or technical style, various fields of science and technology. साइंटिफिक एक मुख्तलिफ लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. इसी तरीके से नंबर 3 पॉपुलर साइंटिफिक स्टाइल आर साइंस फिक्शन, जिसको हम कह रहे होते हैं. न्यूज़पेपर, ब्रीफ न्यूज़ आइटम्स, हेडिंग्स, एडवर्टीजमेंट्स, फीचर्स, एडिटोरियल्स, लीडर्स. यानी न्यूज़पेपर के अंदर हम अगर देखें तो मुख्तलिफ जो है वो एरियाज़ में मुख्तलिफ जॉनरा की लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है. Business or official documents are to be written in a very different style. Our style of legal documents, business letters, contracts, आप देखें तो business letters बिल्कुल ही मुख्तलिफ लिखे जाते हैं. contracts हैं तो उनकी लैंग्वेज अलग होती है. Administrative style, memorandums, military documents, pacts, treaties. Likewise, number 8, medical dentistry, drugs, microsurgery, diseases, children's diseases. Now, in this field, we use a different genre of a language or style of a language. Number 9 is colloquial style, slang language, contractive forms, likewise. Number 10, the internet or emails, chat, blogs, websites, virtual worlds, chat groups, and webinars. Number 11, public speeches. We use different language in public speeches. Thanks for attention. Thank you very much. Hopefully this would have been very helpful for all of you.